Hello, all. Good afternoon. Hello, welcome. Hello, Assalamu alaikum. Good afternoon. Namaste. सब जल्दी जल्दी से आ जाइए. अभी हम लाइव शुरू करने वाले हैं. I hope everybody is joining. I hope everybody is joined now. Let me start now. Shall I start? Assalamu alaikum. Namaste. Good afternoon. My name is Zaitun Hamid. नाम तो सुना होगा. So today I am making a Middle Eastern dish, paneer kapsa. आजकल मिडिल ईस्टर्न इज वेरी फेमस. अभी ट्रेंड में आ चुका है मिडिल ईस्टर्न खाना. तो आज मैं आपको पनीर कब्सा सिखा रही हूँ और पार्मेसन ब्रिंजॉल, फ्राइड ब्रिंजॉल. So let's see the ingredients. अभी 2 मिनट मैं थोड़ा कनेक्ट हो जाऊं. I hope everybody is connected. I can see the viewers now. So let me start once again. Good afternoon. My name is Zaitun Hamid. So आज मैं आपको मिडिल ईस्टर्न पनीर कब्सा सिखा रही हूँ. तो this is paneer kapsa with parmesan fried brinjal or eggplant or aubergine. तो मिडिल ईस्टर्न का खाना आजकल इंडिया में बहुत ट्रेंड हो चुका है. सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. तो सो व्हाई नॉट वी मेक वेजिटेरियन कब्सा. सो आज मैं वेजिटेरियन कब्सा, पनीर कब्सा लेके आई हूँ. So let's start. So I have the ingredients here. So I have 2 cups of long grain rice, a half cup of
paneer, chopped onion, some grated carrot, tomato puree, coriander leaves, ginger garlic, salt, pepper, and this is kapsa masala. This is Arabic masala, 7-spice masala. It is called 7-spice masala. You get it everywhere. It's easily available. So some oil. So let's start. So I have a bowl here, pan. So let's start now. Now we'll put oil. Put 2 spoons of oil. Once the oil is little थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल, तो उसमें रेड अनियन डाल देना. और उसको अच्छा सा फ्राई कर लेना. तो अनियन हमारा लाल हो रहा है. Now you can see. Please bear with me. I am single-handed here doing all your queries. I will attend after the session. I hope you all understand. Yes, you can make the kapsa masala at home. I will give the recipe after the session. Is this direction is okay? Now is it okay? Yes, please bear with me. I am doing single-handed. All your queries I will be posting later. Please, you can put your queries. I will be answering you later.
Now the light is okay. Now you can see light is okay. Thank you. Now you can see our onions are getting fried. You should make it dark brown. इसको अच्छा सा डार्क ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना चाहिए। अभी आपका अरबिक प्लेटर बना सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। पनीर कब्सा, हुमूस, खुबूस, मुतब्बल, तो आप एक स्प्रेड बना सकते हैं विद दिस पनीर कब्सा। आजकल बहुत ट्रेंड हो चुका है अरबिक खाने का, तो आप घर पे ही बना सकते हैं। ऑल योर क्वेरीज प्लीज, आई विल आंसर लेटर। Once this is nicely brown, we'll add our other masalas. Till then I will explain you the masalas once again. We have tomato puree, half cup, 1 grated carrot. This is kapsa masala, 7 spice masala. It is called 7 spice masala. And we have this 1 teaspoon pepper powder, ginger garlic paste 1 teaspoon, and some coriander leaves. Salt to taste, and we have half cup paneer. So now our onion is getting brown. You should make it nice brown color. अच्छा सा भून लेना अनियन को। अच्छा सा अनियन का कलर ब्राउन आएगा तो हमारा कब्सा भी ब्राउन आएगा। Let it get caramelized. थोड़ा सा कैरामल टच आएगा। Now you can see yes, please, I will explain to you about Arabic masala. Because I am single-handed here, so it will be difficult for me to answer now. Please bear for me. प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए और मैं आपको आपके सब क्वेरीज बता दूंगी। अभी हमारा अनियन अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। इसमें हम जिंजर गार्लिक डाल देंगे और पनीर डाल देंगे। See the color is dark brown. You can see nice dark brown color. Now we'll add our tomato paste. Now once the tomato paste is little fried, add our masalas.
pepper powder, Arabic masala, kapsa masala, 7 spice masala. I will tell you all the 7 spice. इसको अच्छा सा भून लीजिए। अभी अच्छा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए एंड सॉल्ट। सॉल्ट आपके टेस्ट चावल के हिसाब से डाल देना। एंड विल पुट अवर कैरेट, ग्रेटेड कैरेट। अभी थोड़ा सा भून लीजिए। So now all our masalas are here. Now we'll add water. अपने चावल के हिसाब से पानी डाल दीजिए। कस्सा का चावल, it should be long grain basmati rice. दो कप चावल है तो I am putting 3 cups of water. It should not be soft. It should be little. The rice should be little separate. थोड़ा सा खिला हुआ चावल चाहिए कप्सा के लिए। So now our masala for the rice is ready. Mix well and then उसको बंद कीजिए। अभी मैं राइस इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ। Now this is okay. Now the camera is okay. Please let me know, because I am doing single-handed. I will not be able to know. Please, is the camera okay now? Recipe name is Paneer Brown Kapsa with Parmesan fried brinjal. Is the camera okay now? Hello, Sangeeta, Madhulika, Ishu, Rachna. Is the camera okay? So our rice is, हमारा पानी में उबाल आने तक हम इसको इधर रख देंगे। Now we'll get ready our brinjal. तो हम पैन में थोड़ा सा तेल डाल के उसको स्लो में Is the camera okay now? Thank you. Thank you, Bhupesh. Thank you, Poonam.
So now till our rice is getting ready, we'll make, हम लोग हमारा ब्रिंजल की तैयारी करेंगे. I hope you all understand. Let me explain to you once again. So I will explain to you once again the kapsa masala. The kapsa masala, the 7 spices are turmeric, cumin, cloves, black pepper, red chilli, coriander, cinnamon, and black cardamom. I hope you understand. The 7 spices include turmeric, cumin, cloves, black pepper, red chilli, coriander, cinnamon, and black cardamom. I hope you all understood the 7 spice masala, the Arabic masala. You can make it, थोड़ा सा इसको आप भून के मसाला बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विदुला. Now let's start our Parmesan fried brinjal. For the Parmesan fried brinjal, we need big brinjals. So we have big brinjal here. Arab people, they like brinjals a lot. They eat brinjals. They have this muttabal, baba ganoush. So they like brinjal. So they make lot of recipes from brinjal. So today I have brought Parmesan fried brinjal. It's called eggplant. It's called aubergine. So you get this big brinjals in market. So now we'll cut this into half. एग्जैक्ट हाफ. अच्छे से उसको आधा, और उसकी जो डंडी है उसको भी आप आधा सा काट लेना है. So it should be very neat cut. So now we'll cut this like this in a flower shape. I hope you all getting it. समझ में आ रहा है आप सबको? प्लीज जो भी क्वेश्चन है आप डाल दीजिए. I will answer you after the session. So this is our brinjal. So cut it like a flower. If it is little, just cut it. So you make it like a flower. You can go like this or like this, anyway, whichever is convenient. Now
We will put some salt. थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि अंदर अच्छा सा नमक ब्रिंजॉल में आ जाए। So let it be there for 2 seconds. Now our water is boiling. Our kapsa water is boiling. So we can put our rice. It should be the long grain rice, basmati rice. अच्छा सा लंबा चावल लेना इसके लिए, बासमती राइस। Once the rice is there, you just mix it and let it cook. You can see the color, very nice brown color. And the smell is amazing. With the kapsa masala smell, it's very amazing smell. खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्लीज, आप सबको अंडरस्टैंड हो रहा है? एवरीबडी इज गेटिंग? ओके, फाइन। नाउ विल गेट बैक टू आवर ब्रिंजॉल। या सॉरी, 2 सेकेंड हो गया है, पता है, बिकॉज आई एम डूइंग सिंगल हैंडेड। नाउ एक टिश्यू लेके इसका पूरा ब्रिंजॉल का पानी निकाल दीजिए। अब जब सॉल्ट डालेंगे तो वाटर कंटेंट आ जाएगा, तो इसको प्लीज आप एक टिश्यू से इसको वाइप कर लीजिए। सी, यू सी द वाटर कंटेंट, so just wipe it off. Take a clean tissue. Good. Just take out all the water content. See, you can see the water. Now this is ready. Now we'll make our batter for brinjal. I hope the camera is now proper. Everybody can see. Now the camera is okay. My rice is getting cooked. You can see the flavors. You can see the colors. इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है और चावल के दाने खिल चुके हैं।
So you can see the texture. Is the camera okay now? Yes, let it get cooked well. Till then we'll come back to yes. Now we will make our batter. I hope सब समझ रहे हैं. This is our batter for Parmesan fried brinjal. 1 teaspoon of corn flour, 1 teaspoon of maida, and I have red chili powder. You can put according to your taste. I put 1/4 teaspoon red chili powder and 1/4 teaspoon pepper powder and grated Parmesan cheese. You can see cheese. You get Parmesan powder also. If you get that, that is good. But I do not get it. So mix well. थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना. इसका एक बैटर बना लेना. आपको अगर ग्रेटेड पार्मेसन चीज पाउडर मिल रहा है तो इज गुड. इट इज नॉट इजीली अवेलेबल. So this is the batter for our brinjal. So mix well. आपको मैं बता दूंगी इसमें क्या है. 1 teaspoon cornflour, 1 teaspoon maida, 1/4 teaspoon red chili powder, 1/4 teaspoon pepper powder, Parmesan grated cheese, and little salt to taste. You have salt in cheese also, so put very less. And we have already put in brinjal also salt, so very less for only for the masalas. Otherwise it will be very salty. So my batter is ready. So mix well, let the cheese get incorporated with the batter, and take a plate, take brinjal, and if there is any water content, please take it out. We should water content निकालने से क्या आपका ब्रिंजल सॉगी नहीं होएगा. It will be crispy. So just apply this masala on top of it. I hope you all understanding. If there is any question, please आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी later. So you can see this flower, the brinjal. It should be like flower. So this is ready. Now let's see our rice. हमारा चावल अभी हो चुका है. इसको अच्छा थोड़ा सा ये
वो कर दीजिए, मिक्स करके इसको दम पे छोड़ दीजिए। इसको आप अच्छा सा मिक्स करके, एंड दिस टाइम यू कैन चेक योर सॉल्ट, इफ यू वांट मोर सॉल्ट यू कैन पुट। अभी ये टाइम आप आपका सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। आई होप इसमें सॉल्ट बराबर है। आई चेक इट, it is perfect. So now I am keeping this for dum. अभी ब्रिंजॉल में आप अच्छा सा मसाला डाल दीजिए। यू कैन पुट विद योर हैंड्स ऑल्सो, you can spread it nicely. So two sides, spread it nicely. And now we are putting breadcrumbs. This is homemade breadcrumbs. You get ready-made breadcrumbs also. You can use that ready-made also. Just separate it and put nicely. Separate the leaves one by one. So nicely spread the breadcrumbs all over and just take with light hand. You can make this, okay? So now it slowly you can put it in hot oil. तेल बहुत गर्म हो चुका है, तो आप उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसको डाल देना। और अब इसको आप लेके आप इसको अच्छा सा शेप दे देना। So now our rice is ready, getting ready. It's getting cooked. इसको अच्छा सा दम मार दें। So here our kapsa is getting ready, and here we have brinjal, fried brinjal. I hope you all getting. प्लीज कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज आप डाल देना कमेंट सेक्शन में। आई विल आंसर यू आफ्टर। पार्मेसन की जगह आप कुछ भी यूज नहीं करें तो भी इट्स लाइक फ्राइड ब्रिंजल हो जाएगा। इट्स नो नेसेसरी, इफ यू डोंट हैव, इफ यू आर नॉट ए चीज लवर, इट्स ओके। इफ यू आर नॉट ए चीज लवर, इट्स ओके। So now our brinjal is getting cooked. So आप इसको थोड़ा सा ये जब हिल जाएगा तो इसको आप शेप दे सकते हैं, लाइक अ फ्लावर। So now turn this. See, look at the brinjal, so lovely. Wow.
It looks amazing and the smell is, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। Look at the texture, color. It's very tempting and amazing. आप प्लीज़ बनाना और प्लीज़ मेरे पेज पे आके पोस्ट करना, so that I know you understood the recipe. So this is getting fried. Now we have our kapsa getting ready. So look at our kapsa is getting ready. See the rice, अच्छा सा छिला छिला हुआ राइस है। अभी थोड़ी देर में इसका जो भी वाटर कंटेंट है वो सूख जाएगा। Now our brinjal is also ready. So now you can check whether it is, पीछे भी अच्छा सा फ्राई हो गया है। Wow, look at that, looks amazing. Separate and let it cook for some time. Now I'll close the fire. Now I'll take it in a plate. Now my kapsa is ready and my brinjal is ready. So let's do plating. अभी मैं आप plating दिखा दूंगी. So just give me 1 second. I'll clear this up. You can see the flavor of kapsa. If there is any question, please आप comments में डाल दीजिए. I will explain to you later. I hope you understand. Now my place is ready, getting ready for the plater. Now you can see my kapsa also is ready. The dana also is ready. अभी थोड़ी देर में इसका वाटर कंटेंट थोड़ा बंद करने के बाद सूख जाएगा and the kapsa will be ready. So just close the fire. I hope you understood this. So now I'll make a plating. प्लीज कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए. आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर. You all are okay? You all are okay? You can see is the camera okay? I hope you all understood. Taslim, Seema, Sukeshni, Neha Arora, hello, how are you? Raj Nayak. अभी और जायकेदार होएगा. आप प्लेटिंग देखें तो इसका और जायका बढ़ जाएगा. हलीमा, हेलो. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग. आप सबको समझ में आया? यस प्लीज. अभी प्लेटिंग कर देंगे प्लीज. थैंक यू सुकेशी, थैंक यू मधुलिका, थैंक यू. नाउ लेट्स डू आवर प्लेटिंग. So this is my kapsa rice already done. I have made it and kept it before to save the timing. So this is the rice ready.
Just look at it. I am opening this now. Now you can see our kapsa rice. So this is already have done and kept it. So this is kapsa rice ready. Now we'll do the plating for the kapsa. So I have a paneer. This is already fried paneer. I have fried and kept it ready for the decoration. Hope you're understanding. सबको समझ में आ गया? Yes, this is our paneer kapsa. Let's do the decoration. So इंडियन खाना हो और इंडियन का मिडिल ईस्टर्न ट्विस्ट हो तो आलू तो बनता है. So these are fried aloo, already fried and kept. So you can decorate जो भी चाहिए आप इसके साथ डेकोरेट कर सकते हैं. आपके घर में जो भी है, like so this is fried. So now I am putting some, because this is fusion, I have used potato for Indian twist, and for the Arabic twist I am using olives to give the Arabic touch. So this is olives. You get olives easily. Olives is actually zaitun in Arabic. So these are some zaitun for you. So you can use anything. You can use any whatever you have in your kitchen for decoration. अरबिक में ऑलवेज उसका प्लेटर बड़े बड़े पोर्शन में करते हैं तो इट लुक्स नाइस. सो आई हैव सम पाइन सीड्स रेडी. These are pine seeds fried and kept ready. So sprinkle it. This will give you Arabic touch. The pine seeds. So now we can sprinkle little coriander leaves. If you want, you can sprinkle coriander leaves, or you can keep it like that. So our kapsa is ready. I hope you understood the kapsa. Hello, Aliza. Hello, Divya. So this is Arabic kapsa, paneer kapsa ready. Now we'll do our plating, brinjal plating. Parmesan fried brinjal. So this is our plate for brinjal. So we have already fried one and kept.
So now what we have made one, we'll keep that. Just hold little, slowly you can hold and keep it. So these are brinjal ready. So these are fried parmesan brinjal. Now we'll do little decoration for this. I have here garlic and yogurt with za'atar flavor for the Arabic sauce. You can have with this, and you can have some like a chaat. Just sprinkle some onion, tomato, you can put chaat masala if you want, or you can just have with this sauce. And we have peri peri sauce. You can add peri peri sauce. Whatever is convenient for you, whatever you have at home. And so this is our brinjal. I hope you understood. Can you see the plating? This is our brinjal plate, parmesan fried brinjal, and this is paneer kapsa. Thank you, Jasmine. Thank you, Ruby. I hope you all got it. Thank you, Amul, for giving me this opportunity. Now you can see my plating nicely. If any queries, please put in a comment box. I'll put the recipe also in my post. You can see now. For the recap, I'll tell you. For kapsa, put some oil, थोड़ा सा तेल ले लेना, फिर उसमें प्याज डाल देना, बारीक काटी हुई प्याज, उसको अच्छा सा डार्क ब्राउन भून लेना. फिर उसमें आप टमाटो पेस्ट हाफ कप, जिंजर गार्लिक 1 teaspoon, 1 teaspoon pepper powder, 2 teaspoon Arabic masala. I explained to you the masalas. 7 spice masala, salt to taste, थोड़ा सा कोतमीर और 1 कैरेट ग्रेटेड. आप सब उसमें भून लीजिए तेल में, और उसमें पानी डाल के राइस डाल देना, और आप बिरयानी के जैसा उसको राइस बना लेना. दिस इज अरबिक बिरयानी पनीर कब्सा. थैंक यू वहीदा. Thank you, Neha. I hope you all will make and enjoy. अब आप इसको पास में से देख सकते हैं. I will send you the recipe, please. मेरे पोस्ट में रेसिपी आप चेक लेना बाद में.
अभी टाइम नहीं है तो आई कैन नॉट टेल यू द रेसिपी अगेन। प्लीज आप चेक कर लेना। इफ एनी कमेंट लेट मी नो, इफ एनी क्वेरी लेट मी नो। एंड दिस इज parmesan fried brinjal. I hope you all getting this. Look at the flower shape, it looks amazing. So आप प्लीज बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। Now I am finishing with the time. If anything, please let me know. I hope you all understood. So thank you Amul for giving me this opportunity, for showing my recipes. So thank you all viewers for coming and supporting me. Yeah, please, I am handling my single-handed कर रही हूँ, आपके आंसर्स अभी नहीं दे सकती। कब्सा मसाला अरबिक मसाला है। यू हैव 7 स्पाइस अरबिक मसाला। उसमें आप टर्मरिक, क्यूमिन, क्लाव्स, ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली, कोरिएंडर, सिनेमन एंड ब्लैक कार्डमन, इस सबको आप भून के आप घर पे मसाला बना सकते हैं। Yes, it is called 7 spice masala. It's Arabic masala. I hope you all getting it. Thank you. Thank you for supporting me and coming. Thank you all. Thank you my friends and family. Thank you. Bye bye. Thank you Amul. Bye. My name is Zaitun Hamid. Please याद रखना। Thank you. Hello Amreen, Aruna, Cheryl, Kamal. Thank you. Bye.